invitation is not by chance, it should be mentioned. All right, live visuals of Putin and Prime Minister Modi there greeting each other with a warm hug. Prime Minister Modi and Putin have arrived. They will be holding a bilateral meeting. Of course, this is crucial as Russia is embroiled in the war with Ukraine. And Prime Minister Modi meeting Putin after visiting Russia for the first time in his third term. Let's remind you how India had chosen Russia as the first country to visit following Prime Minister Modi taking over in the third term. Let's go across to Arth, who's also joining us live from the newsroom there. Arth, Putin and Prime Minister Modi have met. They greeted each other with a hug. We also see External Affairs Minister S. Jaishankar in the meeting. The India-Russia bilateral meeting has begun. What can we expect as the key talking points of this bilateral, other than, of course, the war on... Признательно, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. A meeting between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin currently underway, and the stage looks completely set for this key bilateral. As we can see, the delegations are all seated. बार हमने बात की कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर казань में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कज़ान में
भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность. И сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо.
statements coming in from Prime Minister Modi and President Putin, where they have shown new affirmation, a renewed commitment to the bilateral ties between India and Russia, which has entered a new strategic level. And we can see that the key Modi-Putin bilateral is currently underway, and all eyes are on this heated bilateral right moments ahead of the BRICS summit in Kazan, Russia. And Prime Minister Narendra Modi has once again reiterated his commitment, India's commitment rather, to the ongoing conflict, to resolving the ongoing conflict between Russia and Ukraine. He has once again reiterated that the only solution can be resolved through diplomacy. Diplomacy is the only solution to the conflict, a stance that India has held time and again. And this time, India is calling for an early restoration of peace in this conflict. Prime Minister Modi has received his appreciation from Vladimir Putin earlier as well because of his peace efforts in resolving the Russia-Ukraine conflict. India is seen to be playing a greater role in the global order as an aftermath of this bilateral, which is being held right moments before the key BRICS summit 2024 in Kazan, Russia. We have Dr. Sergey Durianov joining us, the Vice President and Director of Communications of the BRICS Culture and Media Forum. We welcome you on this broadcast, Dr. Sergey. Let me straight away begin with asking you the question: what are the key matters, the key issues on the cards for the leaders during the BRICS Summit 2024, Doctor? Thank you so much for your beautiful question. We can see that today even the name of BRICS, if we'll take first letter, it starts not from Brazil, because President of Brazil will not attend this BRICS summit, but it starts from Bharat. It's Bharat and Russia and Iran, the new member of BRICS. We can translate this particular intergovernment alliance the new way. And Bharat was the first country, Bharat civilization, India was the first country who start with a global discussion of the future cooperation of all BRICS countries. We can see that Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, he looks very happy and full of joy, always smiling. And our leader is very serious because it's a big responsibility to be chairmanship and host all BRICS countries. But everything going well, and thanks a lot for support of Shri Narendra Modi ji. We can see that India particularly have their own interests to develop BRICS alliance. For example, logistics ways. China start with a Silk Way, but India also has some vision how to promote the way of trading through BRICS alliance. And of course, guess now we are continuing our conversation with Dr. Sergey Durianov, and he's Vice President and Director of Communications of the BRICS Cultural Media Forum. He's live from Moscow. He's been having a conversation with our team. Very good afternoon to you, Dr. Durianov. And, this build-up to BRICS summit has seen President Putin take center stage, and in that interaction or engagement with media persons from across BRICS countries, he specifically mentioned a couple of things about India, including Bollywood, including trade, including the possible role for India in a Ukraine-Russia detente. You think this bilateral that's happening between the two leaders, some of those issues or all of those issues actually would be discussed as the meeting happens? Yes, of course, because it's a global agenda right now. We have no any more important topic like a peace. Without peace, we cannot trade, we cannot even be survived. And the condition of peacemaking dialogue based on the spiritual knowledge of Bharat civilization.
we know a lot that always spiritual knowledge can give some enlightenment to the politicians. That's why I completely believe that role of Bharat. I want to repeat it again, that today BRICS start with Bharat. Bharat, Russia, Iran, China, South Africa, and other countries. Come again, Swagatam, welcome to Kazan. Why our national leader Vladimir Putin choose Kazan city? Because it's variety. We are very rich country, not only because of the material resource, but because of culture. Like in India, you have Kashmir and Kanyakumari, and a lot of different Tamil Nadu. We also have different states of Russia. For example, Kazan is completely Muslim. Tatarstan is Muslim republic, but full of traditions. That's why our national leader chooses a special city to welcome all BRICS countries, to show that culture, diversity, that is the future of BRICS alliance. Also, Dr. Durvanov, President Putin also quoted Prime Minister on the nature of BRICS, which is not anti-Western, it is just non-Western. There are concerns in the West that this grouping is sort of shaping up as a very anti-Western alliance, and particularly in the backdrop of Europe war and the kind of media attention the BRICS summit is getting. You think that there could be some focus on that aspect of BRICS, that this is a grouping which is not Western, or this is anti-Western? Completely agree with you that BRICS has their own global agenda, is not anti-West or anti-East. It's based on universal spiritual principles and universal knowledge as well. First of all, I want to mention that our national leader was appreciated to repeat in his speech that India was from the day one, from the beginning of alliance, when it was even not 5 but 4 countries, stay with Russia and start to develop a new vision of modern political agenda and policy, global policy, and which based on justice, which is based on dharma, we can say. That's why it's completely not anti-West. Even we can support West with our vision how to promote traditional values, how to promote humanity, how to promote spiritual knowledge. That's why we should little bit change to see the enemy in collective West. We should choose some politicians which can be positive and open heart and give them opportunity to start with new era, new page of modern history, golden age. I completely believe that together we can do it. He has a question for you. Let Kartat come in. Yeah, and the most important question that also has to be asked now, Dr. Durvanov, is that whether peace agenda will be at the top of discussions in the bilateral meeting as well as the BRICS summit. We had previously seen India's national security advisor also traveling to Moscow to brief President Putin on the meeting between Prime Minister Modi and President Vladimir Zelensky of Ukraine. Do you think that during these bilateral talks, and especially at large at the BRICS summit, for the global development agenda, global peace will also be at the top of the talking points? Yes, that peace agenda is very complicated topic. As you know, we have a lot of players. We can see during the war, even all European countries, they are suffering. They are suffering without Russian support, without Russian oil and gas. Even India support Europe today because India buying oil and gas from us and then supply to Europe to support at least something to economy of European country. Again, who's the main winner of this conflict? We can see that, frankly speaking, everybody understands in the modern situation that America is doing well with their always policy to extract and receive some benefits from any particular conflict in the world. That's why it's a question how we can educate modern politicians in Europe and change their position by logic,
by spiritual knowledge, by discussion and peacemaking dialogue with open hearts. Indeed, and talking about oil and gas, particularly, BRICS is a very interesting multilateral forum. As it stands, BRICS represents almost 44% of the world's crude oil production countries coming together on one platform. I think it is a one of a kind of a platform which rivals with the OPEC. How do you see the energy security now playing out also as a major part of discussion between Russia, as more and more countries are also equally pivoting towards Russia for their energy needs, India being one of them? I can see that future of BRICS not only economy. If we're talking about economy, of course, we should mention that vision of BRICS alliance, it's a win-win situation, it's justice, is coexistent in interdependence, where we depend from each other economy, from each other culture, and coming to the point of the future, I think that we should develop to open new research centers to develop new kind of energy, green energy as well. Because we can see that today all humanity, all our civilization came to the point where we should take care about the future generations. How we will deliver to them possibility to be survived in that conditions. That's why we should take care about future generations. It's very important. But coming to the resource of Russia, everybody understands that Russia has a lot of resource with oil and gas. And it should be some new conditions of discussion with Western politicians, how they should they should remove sanctions from Russia. That is most important. Because it will be also for their benefit, not only Russia, for their benefit. They're suffering a lot because of this conflict and sanctions. Well, building on from what sanctions are all about, another member who is going to attend the BRICS summit, Iran, is also part of a lot of US sanctions, also a major global economy in terms of oil production. But there have been indications that Israel could possibly even strike their energy infrastructure or even their nuclear sites. President Putin also in the last few days has shown indication of a revision perhaps of Russia's nuclear doctrine. As a fellow BRICS member nation and the world's largest democracy, Indians are quite worried and equally looking at the BRICS member states on what they would say about these developments amidst the BRICS nations concerning specifically to nuclear technology. Doctor, would you like to share some light on it? Yes, I want to tell that all BRICS countries, not only countries, it's civilization. For example, Saudi Arabia, Iran, Egypt, even Ethiopia, that very ancient traditional countries, which they we can separately explain them like a civilization, very ancient, with traditions, with roots, with history. And come to the point of the economy. Of course, right now in the Middle East, we can see the very complicated situation because of the conflicts of civilization between Israel, like a Jewish religion and Muslim world. And we should always think how through spiritual knowledge to educate modern politicians, because Israel should give some education to Palestine population, should spray more love and support and change situation for their benefits. It's not question of war. It's not question of some strong efforts. It's a question of spiritual knowledge. And of course, nuclear power is the future. I can see that all humanity should be unite our efforts how to found the new waves to support economy for to deliver the next generation the chance to be survived in the planet Mother Earth. Okay, Dr. Druvanov, because we are discussing BRICS and in fact a bilateral meeting is happening between President Putin and Prime Minister Modi. I'm curious to understand what's on the agenda there. Do you have some idea about what the two leaders could be discussing now? I already mentioned that it's a lot of common interests between our countries, which based in our similarity in spiritual tradition.
Both our leaders, they're believers. They believe to God. And I already mentioned that end of the BRICS summit, which 24 of October, is exactly a birthday of United Nations. And we'll celebrate 79 years of United Nations. Next year will be anniversary, 80 years, 2025. And I think that BRICS can spread the new message to global society to put to basic documents of UN, put God will and particular word of God, because from the when United Nations was installed, USSR and China was completely aggressively against put word God to the basic documents of United Nations. And right now, agenda should be changed. India should spread their Sanatana Dharma knowledge, and we should create new concept of basic documents of United Nations. That is my vision, and I can see that it's completely next step of BRICS development. Yeah, interesting that you mentioned about President Putin believing in God, because we had a very different picture. But we'll continue this conversation and slipping into a short break, coming on the other side. Director, the taste of success. We're now in the bunker that we found underneath a Lebanese house in a Shia village only a couple of kilometers from our border. This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do a larger scale of massacre than the 7th of October. They were planned with the motorcycles here to go to Kiryat Shmona, to Iftach, to villages and positions inside Israel and conduct a massacre. They were only here a couple of days ago. In those beds with those weapons here, we found the fresh coffee and food here, in this compound, underneath the Lebanese village, underneath a Shia house. This wasn't supposed to be here. 1701 should have prevented it. We need to impose a 1701, a fully imposed 1701, this area, so Hezbollah can never be next to our border with such infrastructures that can do a Conquer Galilee plan like he planned. Hassan Nasrallah, this ruthless terrorist that we eliminated, that is responsible.
attend the BRICS summit. He meets with Russian President Vladimir Putin and shares a warm hug. A first response from Army Chief after India-China agreement says India looking at 2020 status quo. An altercation breaks out between TMC MP Kalyan Banerjee and BJP MP Abhijit Gangopadhyay in the Waqf JPC meeting. Banerjee injures himself, is now suspended for a day. Ekta Kapoor, mother Shobha Kapoor, booked under the POCSO Act for objectionable scenes involving minors in old Balaji's Gandhi Baat series. After insulting Sanatan Dharma, Udayanidhi Stalin remains defiant, says will not apologize. We start with breaking news coming in right now, viewers. This in connection with the notice that has been sent to, that has been issued to Ekta Kapoor and Shobha Kapoor. Now, Mumbai Police is all set to record the statement of the minors' parents, and Mumbai Police is set to record the statement of the cast and crew and the director of the series. That's the big update we are getting right now. Viewers, Ekta Kapoor, remember, has been booked under the POCSO Act. Police is all set to record the statement of the minors' parents, and also, of course, the cast, the crew, and also the director. Meenakshi joins us live from outside Balaji Telefilm's office in Mumbai. Now, of course, it's trouble mounting for Ekta Kapoor and Shobha Kapoor. Investigation is currently underway. Mumbai Police in action, Meenakshi, and they are all set to record the statement of the parents of the minor involved in the scene. Yes, they are now in action, but what they are doing from last 3 years, 3 years has been passed, but they did nothing. Initially, they actually didn't take FIR. They didn't file FIR also. I am in front of Balaji Telefilms now, and I am trying to talk to them, but they are not willing to talk to any media person, and they are not allowing me to enter in their office. And as we know, Shobha Kapoor and Ekta Kapoor, they are in travel because the web series streamed on the platform between February 2021 to April 2021. The authorities are currently investigating the case, but the main question, what are they doing from last 3 years? And initially the police did not file any complaint. After a case was filed in court, they were forced to take the complaint under the court's order. For 3 years, Mumbai police have been trying to protect Ekta Kapoor, and this is the main office of Balaji Telefilms Limited. They are not allowing me to enter their office and talk to them. They are not willing to talk anything on this matter, and as we know, Balaji Telefilms had not issued any statement regarding this incident, and the main allegation is the Gandhi Baat season 6. They showed an objectionable scene involving minor girls, and the main complainant. Republic TV has also spoken to the complainant. Republic has spoken to the complainant in this case. Take a listen, and viewers, to what the complainant had to say on this. ने जो कंप्लेंट दर्ज की है एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ, आप उस कंप्लेंट के बारे में बताइए हमें। आपने किस बेसिस पे कंप्लेंट लॉन्च की है मुंबई पुलिस को, और आपने क्या लिखा है अपनी कंप्लेंट पे? विषय ये था कि ये हमारी लड़ाई पिछले 3 वर्षों से थी कि इसमें अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक नाबालिग लड़की को इनडिसेंट तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सूचना हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को दी थी कि इस विषय पर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। पर मुंबई पुलिस से हमें आश्वासन मिला था कि इस विषय पर कार्रवाई होगी, पर मुंबई पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की।
फिर हमने हमारा पत्र चिल्ड्रन राइट कमीशन को दिया, जिसमें चिल्ड्रन राइट कमीशन ने मुंबई पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट का जमा करने का आदेश दिया। फिर भी मुंबई पुलिस ने उस विषय को अनदेखा किया। फिर हमने कोर्ट में याचिका दी और कोर्ट के आदेशानुसार मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी मुंबई पुलिस शांत बैठी है। अगर इस विषय पर कोई अगर आम नागरिक होता तो अब तक उसे परिवार समेत उठा लिया होता। जी पुरोहित जी, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आपने अपनी एफआईआर दर्ज करवा दी है मुंबई पुलिस पे और मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कब आपने ये एफआईआर दर्ज करवाई और मुंबई पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था जब आप उनके पास ये कंप्लेंट लेके गए? और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ये कंप्लेंट कब लॉन्च करवाई? ये अभी फ्राइडे को हुई है कंप्लेंट दर्ज। और मुंबई पुलिस का हमेशा रवैया ये रहता था कि एकता कपूर जी के पास पद्मश्री है, उसके खिलाफ एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये हमेशा मुंबई पुलिस ने इस विषय को टाला है और आज भी वो मुंबई पुलिस इस विषय को टाल रही है। जी पुरोहित जी, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। आपने इस ओटीटी सीरीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। आपने कहा है अपनी कंप्लेंट में कि इसमें जो एक माइनर का इस्तेमाल हुआ है, एक बच्चे का इस्तेमाल हुआ है इन अडल्ट मूवी, वो काफी आपत्तिजनक है और आपने इसी चीज को लेके आप मुंबई पुलिस के पास गए थे। आप हमें बताइए कि आपने अपने कंप्लेंट में किस किस के खिलाफ आपने कंप्लेंट लिखी है? इसमें एकता कपूर जी और शोभा कपूर जी और अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर इनके खिलाफ हमारी जो ये कंप्लेंट हुई है। और हमारा कंप्लेंट करने का मोटिव ये था कि आज जो पूरे भारत देश में जो छोटी बच्चियों के साथ जो अश्लील हरकतें हो रही है, जो बलात्कार हो रही है, उन सब का कारण यही है जो ऐसे अश्लील वीडियो परोस रहे। और हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। और अभी फिलहाल 14 मार्च 2024 को आईबी मिनिस्ट्री ने 18 वेबसाइट को प्रतिबंध किया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट बालाजी को उन्होंने छोड़ा है। जी, उसका छोड़ने का कारण क्या है? क्यों अल्ट बालाजी की वेबसाइट को अनदेखा किया है? Breaking news coming right now. Well, there's no end to the threats to the flights, no end to the bomb threats that are being sent up to the flights. And in the latest, we have a fresh threat has been issued to 11 Vistara flights. That's the big breaking news we have at the moment. There's no end to the mid-air bomb scare. These are 11 Vistara flights that have received the fresh bomb threats issued to 11 Vistara flights. More than 100 flights up until now, it was in the past 1 week, have been issued. And we're getting in more updates on that. Piyush Shori is joining us live on the broadcast from the national capital. Piyush, well, once again we see that Air Vistara, the Vistara flights are being targeted. This is a number that has now mounted to 100, at least 100 flights have been the target in the past 1 week, and there is no end to these threats. You rightly mentioned, Lakshita, that there is just no end to this nuisance which is being spreading from day one of this week. And as you said, that today also we saw that how 13 flights of Air India and now 11 flights of Vistara have been targeted by this hoax messages. In fact, this hoax messages was once again given through a social media website. Some of the flights in which the bomb threat of Vistara have been sent is flight UK 17, flights UK 23, flight UK 25, flight UK 107 and several other flights among the 11 flights. So yes, today again we have witnessed this dangerous pattern of thoughts in which hoax messages are being sent to prominent airlines through social media messages. We have already witnessed that today only we have seen that there have been 13 Air India flights which have been targeted by this hoax messages, and now there have been 11 Vistara flights that have been targeted by this hoax messages. In addition to this, we have also today witnessed that some of the schools, especially the CRPF schools, also have been targeted by the hoax messages. So now it becomes very important for all the probing agencies
which is being examined by the Ministry of Home Affairs, nevertheless, to make sure that such kind of home messages does not cause further panic to the citizens of the country. Back to the studio. Piyush, of course, the MHA has at least held 3 high-level meetings, but the threats, of course, continue unabated. Thank you so much, Piyush, for joining us with those updates coming in. We'll keep a close eye on that. But now we shift our focus to Udayanidhi Stalin viewers, who's once again stoked controversy, this time in connection with the language row. Now, he's urged all the newlywed couples to name their children in Tamil, that their babies should have Tamil names. And once again, of course, stoking the debate around Hindi, and he has said that this is all being done in the to counter the imposition, as he calls it, of Hindi language. In fact, he's cited the concerns of imposition of Hindi in Tamil Nadu. He was speaking on this issue, highlighting attempts to introduce Hindi through the new education policy. He said that there are attempts being made to introduce Hindi through the NEP, that is the new education policy, and changes to Tamil symbols. And he referenced past efforts to change the state's name and the public outcry that led to an apology, asserting that neither Tamil nor Dravidian identity will be compromised as long as the DMK and the people of Tamil Nadu stand united against Hindi imposition. So that's the update we have right now. Udayanidhi Stalin once again sparking a row. And he has said that Tamil Nadu will never accept the imposition of Hindi. Listen in. இன்னொரு வேண்டுகோள், உங்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைக்கு ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, அழகான ஒரு தமிழ் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்று நான் உங்கள் சார்பாக மணமக்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு பல பேர் எப்படியாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்தியை எப்படியாவது திணிச்சிடலான்னு பல்வேறு வழிகளில் முயற்சிக்கிறாங்க. நேரடியாக முடியல. அதனால தான் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திலிருந்து சில வார்த்தைகளை நீக்கிறாங்க. புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு சொல்லி ஹிந்தி திணிப்பை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முயற்சிக்கிறாங்க. இதையெல்லாம் இதற்கு பலர் துணை போக முயன்றாங்க. ஆனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் செஞ்ச செயலில் அனைவரும் இன்னைக்கு மண்ணை கவி கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே ஒருத்தர் முயற்சி செஞ்சார். அண்ணா சூட்டிய பெயர், தமிழ்நாடு என்ற நம்முடைய நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் சூட்டியவர் பேரறிஞர் அண்ணா. அந்த பெயரை மாற்றணும்னு ஒருத்தர் முயற்சித்தார். ஆனால் தமிழ்நாடு முழுக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுனால மன்னிப்பு கேட்டார். இப்பொழுது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தில் திராவிடத்தை நீக்கின என்று சிலர் கிளம்பி இருக்கின்றாங்க. திமுகவுடைய கடைசி தொண்டன் உள்ளவரை, தமிழன் கடைசி தமிழன் இருக்கின்றவரை இங்கே தமிழையும் தமிழ்நாட்டையும் திராவிடத்தையும் யாராலும் எதுவும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை இந்த திருமண விழாவிலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். Stalin has said that Ivera, Mr. Karunanidhi, Mr. Stalin and himself has fought for women's rights, and he said there was a very big situation that even women were not able to come out of their houses. I am asking Mr. Udayanidhi Stalin only one thing. If you are really worried about women, if you have your own concerns, let DMK make a woman as a chief minister. It is your family party, dynasty politics, no problem. You make Ms. Kanimozhi as the chief minister of Tamil Nadu. You have a lot of MLAs with you. She has got a lot of political experience. She likes E.V. Ramaswamy. She likes her father, Mr. Karunanidhi, her brother, Mr. Stalin. If you are really worried about women's empowerment, why not you make Kanimozhi as the chief minister of Tamil Nadu? It is a challenge to you. You know, Udayanidhi Stalin has not made such comments, divisive comments for the first time. In fact, he has made incendiary comments insulting Sanatan Dharma. And in the latest, he has also refused to apologize for his statements, calling Sanatan Dharma dengue, comparing it to dengue and malaria, and calling for the eradication of Sanatan Dharma. Udayanidhi Stalin came up with a set of remarks that are highly condemnable on Sanatan Dharma. One has noted that these comments of calling Sanatan Dharma a disease, comparing it with a disease, were only against Sanatan Dharma and no other religion. He did not pick up a single other religion but just targeted Sanatan Dharma, which has become a sort of a fashion with many leaders. He says he wants to stand by it. That is his right. He is facing legal consequences in some places on account of those comments. He has to face that. In any case, will bring people like Udayanidhi Stalin ji to understand and appreciate that Sanatan Dharma is much stronger
than the distasteful comments that political people like him bring just to run down a religion or a spiritual thought for the sake of their political agenda or to appease a certain segment of society. डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन बीमारी और सनातन के खात्मे के बयान पर वो कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई भी कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हेट स्पीच बोला था। राहुल गांधी वैसे मोहब्बत की दुकान कह कहकर भागते रहते इधर उधर, पर ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी स्वयं जिस प्रकार के बयानबाजी करती है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, शक्ति से लड़ेंगे, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते, हिंदू हिंसक है, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का विरोध करो। समाजवादी पार्टी कहती है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, हिंदू धन धोखा है। आरजेडी कहती है मंदिर गुलामी की निशानी है। इनके कई नेता कहते हैं सनातन जो है वो बीमारी है, सनातन समाप्त हो जाए। अब उद्धव सेना बताए हिंदुत्व और सनातन की बड़ी बातें करती है, पर इस प्रकार के गठबंधन के साथियों के साथ, कांग्रेस के साथ, डीएमके के साथ उद्धव जी हिंदुत्व से समझौता, फिर आपने सावरकर जी के सम्मान के साथ समझौता, इसको कहते हैं विचारधारा जिहाद। आज पोजीशन लीजिए, आप लात मारिए डीएमके को और हटाइए या गठबंधन छोड़िए। इस प्रकार का कांग्रेस और डीएमके और सपा के साथ गठबंधन करेंगे, फिर आप हिंदुत्व के शेर नहीं, आप सेकुलरिज्म की और वोट बैंक की भीगी बिल्ली बन गए। Delhi, Hyderabad, CRPF schools get threat. Is Ekta guilty of filming a minor in the adult scene? How can South tackle aging population? All this and more at 6 p.m. across the Republic. The announcement this afternoon that India and China have made a strategic decision to resolve part of the military standoff across the line of actual control is very, very significant, because this comes at a time when the United States is using its deep state trying to build pressure on India through different instruments. And then the US wants to do that and use India as a pawn in their game against China. So when we say that we are individually one-to-one solving our problems with China, we are not saying we have a great relationship with China, but we are fixing it. When we do that, the United States and its deep state will be very unhappy, because all that the US has been doing has been building a sense of fear that the only hope for India in case of an armed or military conflict with China is Washington. And I say we can't trust Washington. Washington is wily. It only looks at its own interests. It has the biggest financial stake in China itself and is only expecting to use India as a lever to pressurize China. So it's very good that we are resolving as much as we can on our own with China. It's not 100%. Troops of the Sudarshan Chakra Corps have embarked on exercise Swavlamban Shakti. Powered by indigenous innovations and an unwavering commitment for Atmanirbhar Bharat. Witness the transformation of an unstoppable force with the integration of breakthrough technology and refined tactics. With the aim to boost the efforts of the Indian Army in 2024, the year of technology absorption, our warriors are not just preparing for the future, they are shaping it. Exercise Swavlamban Shakti, the future of warfare, unfolds on 22nd October. Delhi, Hyderabad, CRPF schools get threat. Is Ekta guilty of filming a minor in the adult scene? How can South tackle aging population? All
All this and more at 6 p.m. across the Republic. Give us what you stole from us! Our bones, our skulls, our babies, our people! You destroyed our land! Give us the treaties! This is not your land! This is not your land! You are not my kids! You are not our kids! Well, I got carried out by the AFP, so I didn't get a chance to look around on who was supporting me, but I certainly got a few nods from Aboriginal people in the room to show that they support my resistance, which is the resistance of my people for over 200 years. We'll continue to resist the colony until we have a peacemaking treaty where we can celebrate this country together. We don't need a king from another country to dictate to us what we do here. Great. And we will resist always. Until we have peace, we will resist. Thank you. Not my king. Never will be my king. Not my king. Delhi, Hyderabad, CRPF schools get threat. Is Ekta guilty of filming a minor in the adult scene? How can South tackle aging population? All this and more at 6 p.m. across the Republic. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very good evening, viewers. You're watching Republic TV and I'm Rakshita Mishra with you on Live and Breaking. Well, the BRICS summit has kick-started. Prime Minister Narendra Modi is in Kazan. An important lineup, of course. We will be getting you a lowdown of Prime Minister Modi will be holding talks with the Russian President Vladimir Putin. And we'll get you insights on that. But first up, the headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi arrives in Kazan to attend the BRICS summit. He meet Russian President Vladimir Putin today. First response from Army Chief after Indo-China patrol agreement, says India looking at the 2020 status quo. An altercation breaks out between TMC MP and BJP MP in the Waqf JPC meeting. TMC MP Kalyan Banerjee injures himself. He is now suspended. Ekta Kapoor, mother Shobha Kapoor, booked under the POCSO Act for objectionable scenes in Old Balaji's Gandhi Baat. Mumbai police now send a notice. After insulting Sanatan Dharma, Udayanidhi Stalin remains defiant, says he will not apologize. And viewers, Prime Minister Modi is attending the 16th BRICS summit in Russia's Kazan, and he is going to hold bilateral talks with President Putin. The talks focusing on multilateralism, strengthening India-Russia ties. Two leaders, in fact, are right now in a dialogue. They were seen shaking hands, sharing a warm hug. Earlier, the Prime Minister received a grand welcome by the Indian diaspora in Russia. So you can see the handshake there.
after a grand welcome for the Prime Minister upon his arrival in Kazan. And remember, this is the second visit of the Prime Minister to Russia this year. If you see, right after he was elected for the third straight term as the Prime Minister of India, his first bilateral meeting was with the Russian president in Moscow. And this time, once again, we've seen as many months the Prime Minister in Russia, once again holding talks with Vladimir Putin. Of course, there's lots on the agenda, a lot of speculations around the other bilateral that could be between Xi Jinping, the Chinese president, and the Indian Prime Minister right after the LAC agreement between New Delhi and Beijing. Putin, of course, right now, as he was speaking to Prime Minister Modi is supporting peace and stability, sending out the message of peace and dialogue to resolve issues, to resolve the war, to resolve the conflicts. Take a listen into what the Prime Minister said. Excellency, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कजान में आपका स्वागत है। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет
будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है. And now we shift our focus to Tamil Nadu, where the Deputy Chief Minister and DMK leader Udayanidhi Stalin has once again stoked a controversy after he asked the newlyweds to name their children in Tamil, and this because he was raising concerns about the imposition, what he says is imposition of Hindi language in Tamil Nadu. Now, he has sparked a row with that statement. He has talked of attempts to introduce Hindi through the new education policy and the changes to Tamil symbols. And he has in fact referenced the past efforts to change the state's name and the public outcry that led to an apology, asserting that neither Tamil nor Dravidian identity will be compromised as long as the DMK and the people of Tamil Nadu stand united against Hindi imposition. So the language debate once again stoked by DMK as part of the India Alliance, and let's take a listen in fact to what Stalin had to say. இன்னொரு வேண்டுகோள், உங்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைக்கு ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி அழகான ஒரு தமிழ் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்று நான் உங்கள் சார்பாக மணமக்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு பல பேர் எப்படியாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்தியை எப்படியாவது திணிச்சிடலான்னு பல்வேறு வழிகளில் முயற்சிக்கிறாங்க. நேரடியாக முடியல. அதனால தான் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திலிருந்து சில வார்த்தைகளை நீக்கிறாங்க. புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு சொல்லி ஹிந்தி திணிப்பை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முயற்சிக்கிறாங்க. இதையெல்லாம் இதற்கு பலர் துணை போக முயன்றாங்க. ஆனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் செஞ்ச செயலில் அனைவரும் இன்னைக்கு மண்ணை கவி கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே ஒருத்தர் முயற்சி செஞ்சார். அண்ணா சூட்டிய பெயர் தமிழ்நாடு என்ற நம்முடைய நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் சூட்டியவர் பேரறிஞர் அண்ணா. அந்த பெயரை மாற்றணும்னு ஒருத்தர் முயற்சித்தார். ஆனால் தமிழ்நாடு முழுக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுனால மன்னிப்பு கேட்டார். இப்பொழுது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தில் திராவிடத்தை நீக்கணும் என்று சிலர் கிளம்பி இருக்கின்றாங்க. திமுகவுடைய கடைசி தொண்டன் உள்ளவரை, தமிழன் கடைசி தமிழன் இருக்கின்றவரை இங்கே தமிழையும் தமிழ்நாட்டையும் திராவிடத்தையும் யாராலும் எதுவும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை இந்த திருமண விழாவிலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். Stalin has said that Ivera, Mr. Karunanidhi, Mr. Stalin and himself has fought for women's rights, and he said there was a very big situation that even women were not able to come out of their houses. I am asking Mr. Udayanidhi Stalin only one thing. If you are really worried about women, if you have your own concerns, let DMK make a woman as a chief minister. It is your family party, dynasty politics, no problem. You make Ms. Kanimozhi as the chief minister of Tamil Nadu. You have a lot of MLAs with you. She has got a lot of political experience. She likes E.V. Ramaswamy. She likes her father, Mr. Karunanidhi, her brother, Mr. Stalin. If you are really worried about women's empowerment, why not you make Kanimozhi as the chief minister of Tamil Nadu? It is a challenge to you. Stalin is the same person who had insulted Sanatan Dharm, and now he has also refused to apologize for those remarks when he compares Sanatan Dharm to dengue, to malaria, calls for the eradication, and multiple reactions that are coming from the BJP on that. Take a listen in. Udayanidhi Stalin came up with a set of remarks that are highly condemnable on Sanatan Dharm. One has noted that these comments of calling Sanatan Dharm a disease, comparing it with a disease, were only against Sanatan Dharma and no other religion. He did not pick up a single other religion but just targeted Sanatan Dharma, which has become a sort of a fashion with many leaders. He says he wants to stand by it. That is his right. He is facing legal consequences in some places on account of those comments. He has to face that. In any case, we'll bring people like Udayanidhi Stalin ji to understand and appreciate that Sanatan Dharma is much stronger than the distasteful comments that political people like him bring just to run down a religion or a spiritual thought for the sake of their political agenda or to appease a certain segment of society. डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि
सनातन बीमारी और सनातन के खात्मे के बयान पर वो कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई भी कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हेट स्पीच बोला था। राहुल गांधी वैसे मोहब्बत की दुकान कह कहकर भागते रहते इधर उधर, पर ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी स्वयं जिस प्रकार के बयानबाजी करती है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना, शक्ति से लड़ेंगे, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते, हिंदू हिंसक है, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का विरोध करो। समाजवादी पार्टी कहती है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड हिंदू धंधों का है। आरजेडी कहती है मंदिर गुलामी की निशानी है। इनके कई नेता कहते हैं सनातन जो है वो बीमारी है, सनातन समाप्त हो जाए। अब उद्धव सेना बताए हिंदुत्व और सनातन की बड़ी बातें करती है, पर इस प्रकार के गठबंधन के साथियों के साथ, कांग्रेस के साथ, डीएमके के साथ उद्धव जी हिंदुत्व से समझौता, फिर आपने सावरकर जी के सम्मान के साथ समझौता, इसको कहते हैं विचारधारा जिहाद। आज पोजीशन लीजिए, आप लात मारिए डीएमके को और हटाइए, या गठबंधन छोड़िए। इस प्रकार का कांग्रेस और डीएमके और सपा के साथ गठबंधन करेंगे, फिर आप हिंदुत्व के शेर नहीं, आप सेकुलरिज्म की और वोट बैंक की भी बिल्ली बन गए। Now, as the ruling Mahayuti and the Mahavikas Aghadi stepped up efforts to finalize the share of seats for the upcoming Maharashtra Assembly elections, posters calling for Hindu unity have gone up across the state in a possible indication that the messaging around Batenge to Katenge call could emerge as a key poll plank. The posters had the image of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who coined the slogan to avoid a split in the majority votes. And below Yogi's face were inscribed, the words that were inscribed were Batenge to katenge, that we will, if we get divided, then of course it will be something that will not go down well, that then we will suffer. Watch this report. Posters calling for Hindu unity went up across Maharashtra, creating ripples ahead of the state assembly elections. The posters had the image of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, below which were inscribed the words Batenge to katenge. The posters came as an indication that the larger political messaging around the slogan, which is believed to have helped the BJP ace the Haryana test, could now have a big role to play in Maharashtra. The slogan, which loosely translates to "We will be destroyed if divided," was coined by Yogi to prevent a split in majority votes. A split in majority votes, especially in the heartland states of UP and Maharashtra, was seen as one of the reasons for the BJP's underwhelming showing in the last Lok Sabha elections. मुंबई के अंधेरी इलाके में लगा है सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है, और लिखा गया है पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर लगाया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, और यही संदेश देने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ जो पोस्टर लगाए हैं विश्वबंधु राय, उनसे बात करते हैं। आखिर आपने ये पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्यों लगाया है? मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया, कैसे लाया ये आपको भी पता है। वही नारा सेम यहाँ चलने वाला। उत्तर भारत के लोग योगी जी को मानते हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए हमने उनका नारा यहाँ पे भी बुलंद कर दिया। एक बहुत अच्छी सोच है ये, बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो फिर हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है, और ये सनातन धर्म और के जो हमारे लोग हैं उनको ये चीज़ को सोचना चाहिए कि आप बटेंगे तो कटेंगे। और क्या चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम महाराष्ट्र, मुंबई के अलग अलग इलाकों में आके प्रचार करे ज़्यादा? अरे भाई, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि योगी जी का ही अब शासन चलेगा। The BJP came out in support of the posters. देखो, ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे। आपको मालूम है कि देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश, और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही। According to the sources, there is already a demand for Yogi to campaign more in the state as the polls near.
An unfazed Shiv Sena UBT, however, said that the people of Maharashtra will give a befitting reply to the BJP on November 23rd, the counting day. मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। मुंबई महाराष्ट्र की जनता आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हर प्रांत के नागरिक यहाँ रहते हैं। तो यहाँ कोई बंटता नहीं है, न तो कोई बांटता है। बटने बांटने वालों से मुंबई की जनता सावधान रहती है। Even as a political war of words erupts, the unity posters have doubtlessly added an element of intrigue to the upcoming polls. Focus some more stories from across the country now. The Delhi police has informed the Delhi High Court today that climate activist Sonam Wangchuk and his associates from Ladakh have ended their protest and fast after discussions. Recently, the Delhi High Court sought a response from the police regarding a plea to permit Wangchuk's climate protest at Jantar Mantar. Amid the ongoing conflict in the Middle East in West Asia, India took a significant step in providing humanitarian aid for the people of Palestine. This initial consignment comprises 30 tons of essential items, including medicines, surgical supplies, dental products, general medical items, and high-energy biscuits, which will be distributed through the United Nations Relief and Work Agency for Palestine refugees in the Near East. The National Investigation Agency arrested 3 more accused in the 2022 ISIS-inspired Coimbatore car bomb blast case. The probe agency said in a statement that with the arrest of Abu Hanifa, Saran Mariappan and Pavas Rahman, the NIA has unearthed the terror financing angle in the case. The NIA says that the investigations reveal the 3 accused had colluded to provide funds for the commission of terror. More than a dozen workers were injured in a powerful blast at the ordnance factory Kamari and Madhya Pradesh's Jabalpur. The blast took place at around 9:45 a.m. when explosive material was being filled in bombs in a refilling section of the factory. Among the injured people, 2 were in a serious condition admitted to the hospital, and another worker was missing and was possibly trapped under the debris of the section in which the blast took place. Viewers, we have breaking news coming in from Jammu and Kashmir right now. Now, the labourers who were the eyewitnesses of the Gandarbal attack have spoken to Republic TV. They were leaving the camp after the deadly terror attack, and they are going to get us the account, what they in fact had seen through their own eyes. My colleague Aravat is getting us that conversation. Let's take a listen in, viewers. All right, in fact, I'll just go across to Aravat first. Aravat, what are you picking up? What have the labourers who are witness to this terror attack telling you? Yeah, absolutely. We are here at the attack site where this attack took place, and in fact, the Republic has accessed some individuals who have witnessed this attack. In fact, आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और क्या हुआ था उस रात जिस दिन ये अटैक हुआ? मेरा नाम है अंकित देव सिंह, मेरा घर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जब जिस दिन अटैक हुआ था कुछ 7:10 हुए थे, तब मैं वहाँ पे मेरी मैस में अंदर ड्यूटी थी वहाँ के अंदर। जब पहली गोली चली हमने सोचा ऐसे ही पटाखे वड़ाके उठ रहे होंगे, हमने इतना फोकस नहीं किया उसके ऊपर। सब लड़के बोल रहे थे, हमने इतना फोकस नहीं किया। उसके बाद जब लगातार कोई 10-15 मिनट तक फायर होते रहे, उसके बाद हमने महसूस किया नहीं ये तो गोली की आवाज़ है। उसके बाद हम सब लड़के भागने लगे। जो हमारे गार्ड थे, जो गाड़ी थी हमारी जला दी वहाँ पे ऊपर, वो वहाँ से एक हमारा ड्राइवर चला जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भागता हुआ आया। उसके ऊपर उन्होंने गोलियाँ मारी, वो बच के जैसे मर्जी हमारे तक पहुँच गया नीचे, गाड़ी ब्लास्ट कर दी उन्होंने। फिर उसने हमें नीचे आके बताया भाग जाओ, ऐसे ऐसे फायरिंग हो रही है बड़ी ज़्यादा, जान बचाओ, इधर से भागो। उसके बाद हम कोई 2 किलोमीटर भागते हुए गए, सीआरपी वहाँ पे नाका है उसके पास गए। पूरी रात हमने वहाँ पे गुजारी। फिर उसके बाद जैसे हमें पता चला, फ़ोन किया हमें, यहाँ पे कैंपों में हमारे जो अफसर थे उन्होंने हमें बताया कुछ 7 बंदे हमारे मर गए थे। जो हमारे एफ कंपनी के जो अफसर थे, 3 बड़े अफसर थे जो उनकी डेथ हो गई। एक मजदूर था, एक दिहाड़ी लगाता था बेरा, एक उसकी बेरे की डेथ हो गई। एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड था जो गिर के उसकी पाँव टूट गया है, अभी वो हॉस्पिटल में है श्रीनगर में। बड़ा बुरा हुआ।
किसी ने देखा है अटैकर्स को, कितने लोग थे और क्या वो उनके पास छोटे वेपन्स थे या कोई बड़ा वेपन उनके पास था? वो तो बोल रहे थे छोटा वेपन ही था, जो पहले फायर किए वो बोल रहे थे पिस्टल के फायर थे जो छोटी होती है, तो उसके बाद AKM के फायर हुए हैं, बड़ी गन के फायर हुए हैं। तो जो 1-2 बंदा मारे हैं वो बोल रहे हैं पिस्टल के साथ मारा है, जो अचानक सीधा उसके सिर के ऊपर गोली रख के मारा हुआ है। जो हमारा गार्ड था जिसने देखा हुआ है वो बोल रहा था एक ही बंदा मुझे दिखाई दिया जिसने मेरे ऊपर गोलियां चलाई, उसने जैसे मर्जी अपनी जान बचा दी, नाले के नीचे डाई मार दी, उसकी पाँव ही टूट गया। उसके बाद उसको कोई पता नहीं लगा, वो 1 घंटे तक बेहोश रहा। कितने गाड़ियों को ब्लास्ट किया है वहाँ पे? कुछ तो एक ही थी जो हमारी स्कूटी की थी, जो रास्ते में खड़ी थी। वो बंदा भाग गया ना, गाड़ी आन ही रख दी उसने, डर के मारे बेचारा नीचे को भाग गया। वो गाड़ी आने, उन्होंने सोचा होगा क्या पता बीच में बंदे होंगे, उन्होंने उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, उधर से गेट से भाग गए वहाँ। वो क्या ये जो एरिया जहाँ आप रहते हैं, इससे पहले आपको कभी कोई थ्रेट महसूस हुआ? और ये बताइए क्या वहाँ पे CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए हैं? CCTV कैमरे भी बहुत लगे हैं अंदर, कैंप के अंदर बहुत कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा कभी हमने सुना नहीं था। सब बोलते थे कोई 10-15 साल से इधर कोई हादसा नहीं, सबसे जोन एरिया मानते थे इस एरिया को। हमने नहीं सोचा सर। आपका कोई साथी जो मारा गया इस अटैक में या घायल हुआ? सर घायल हुआ, हमारा एक साथी था, मेरे कमरे में रहता था, जगतार सिंह कठुआ से था, वो हमारे कमरे में रहता। आज ही उसकी ड्यूटी लगी थी ऊपर बिहारी की, उसकी पाँव ही टूट गया, नीचे से हड्डी टूट गई एक। अब वो हॉस्पिटल में है श्रीनगर में। ओवरऑल क्या लग रहा है अभी आपको इस अटैक के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिनेरियो का क्या लगता है? अभी सब लड़के जा ही रहे हैं घर को, सब जा रहे हैं, 7 आज जा रहे हैं, 4 सुबह गए थे, सब जा रहे हैं लड़के इधर से। अब कौन रहेगा इधर इतना डर में, सब जा रहे हैं घर में सर। क्या ये ओनली लेबर्स को निशाना बनाया गया है या इसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी या सिविलियन भी वहाँ रहते थे, या पर्टिकुलरली आपको लगता है कि लेबर्स को टारगेट किया? उन्होंने सबको गया, उनके आगे जो आया ना उन्होंने सबको गया। हम तो अपने JPC के चेयरमैन के नाते इस JPC में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई और जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज़ किया मुझे या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। TMC के जो उच्च नेतृत्व है उनसे बात करेंगे सर? मैं क्यों करूँगा? Right, that was Jagdambika Pal, who is the JPC chairperson. And it's his first response after the scuffle, after the violence that broke out during the JPC meeting, wherein Kalyan Banerjee has smashed the glass bottle, and he was telling about what really happened inside Republic TV. In fact, had got you first the inside details of that verbal duel. In fact, it turned violent. Once again, Mamata's MP misbehaving there. He smashed that glass bottle. You can see the pieces, and he injured himself. And then he's suspended also for 1 day. And that happened during this ruckus, during the JPC meeting. And Jagdambika Pal said they cannot imagine that such an incident happened. Delhi, Hyderabad, CRPF schools get threat. Is Ekta guilty of filming a minor in the adult scene? How can South tackle aging population? All this and more at 6 p.m. across the Republic. Director, the taste of success.
האחרונה נורו עשרות שיגורים לעבר יישובי הצפון. בעוד מספר דקות נפיץ אזהרת פינוי מקדימה לתושבי לבנון בביירות ובמקומות נוספים, להתפנות מאתרים המשמשים למימון פעילות הטרור של חיזבאללה. אני מדגיש כאן, כל מי שימצא סמוך לאתרים המשמשים למימון פעילות הטרור של חיזבאללה, נדרש ממנו להתרחק מהם מיד. אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות, ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. Republic deep investigation. For the first time on national television, Zishan Siddiqui spills the beans. Demolishes Bishnoi Bollywood narrative. Zishan's tell-all interview with Republic. Unmissable, explosive, exclusive at 7 p.m. Republic deep investigation. For the first time on national television, Zishan Siddiqui spills the beans. Demolishes Bishnoi Bollywood narrative. Zishan's tell-all interview with Republic. Unmissable, explosive, exclusive at 7 p.m. Past 5 and you're watching live and breaking with me, Shavins, and ladies and gentlemen, a new world order is in the making, and the isolation of Russia appears to have now come to an end. What's really up as far as the BRICS is concerned, and how exactly is this BRICS summit
different than what we saw in the past, with a proper representation of the global south, is the new world order in formation. All this and much more on this edition. But up first, let's take you through the headlines we're tracking at this hour. Prime Minister Narendra Modi arrives in Kazan to attend BRICS key meet Russian President Vladimir Putin today. First response from Army Chief after India-China patrol agreement says India looking at 2020 status quo. An altercation breaks out between Trinamool Congress parliamentarian and BJP parliamentarian in Waqf JPC meet. Trinamool Congress parliamentarian Kalyan Banerjee injures himself. Ekta Kapoor mother Shobha booked under POCSO Act for objectionable scenes in Old Balaji's Gandhi Baat. Now Mumbai police sends them a notice. After insulting Sanatan Dharm, Udayanidhi Stalin remains defiant, says will not apologize. Massive altercation took place between Trinamool Congress parliamentarian Kalyan Banerjee and BJP parliamentarian Abhijit Gangopadhyay. This was during the Waqf meeting. Sources within the JPC meeting indicating that this drama ensued after Kalyan Banerjee interrupted those who were speaking before him. In fact, bureaucrats who were basically called in for a presentation that they were essentially making, something that did not go down really well with Kalyan Banerjee. Remember, he's already been suspended by the JPC. In fact, a short while back, this is what Kalyan Banerjee had to say when he was asked about what really happened inside the JPC. Listen to what the Trinamool Congress parliamentarian had to say. Mr. Banerjee, what would you like to say? Why have you been... Please tell. Mr. Banerjee, what happened? Mr. Banerjee, why have you been suspended? Is it because of your unruly behavior? Nothing anything happened in the JPC can be said. Is it because of your unruly behavior that you have been suspended? Mr. Banerjee, is it because of your unruly behavior that you have been suspended? Why did you misbehave with Mr. Gangopadhyay? How did you get hurt? Mr. Banerjee, what would you like to say? Why have you been... Please tell. Mr. Banerjee, what happened? Mr. Banerjee, why have you been suspended? Is it because of your unruly behavior? Nothing anything happened in the JPC can be said. Is it because of your unruly behavior that you have been suspended? Mr. Banerjee, is it because of your unruly behavior that you have been suspended? Why did you misbehave with Mr. Gangopadhyay? How did you get hurt? Well, in fact, my colleague Samya is joining us from outside Kalyan Banerjee's residence. A short while back, Samya, our colleague Harsha sent us details with regards to as to what really happened inside the meeting. What more can you tell us?
Yes, this happened in a particular committee meeting that was headed by BJP MP Jagdambika Pal, in which the sides of a group of retired judges and lawyers were being heard, wherein the opposition had to comment on their stake in the matter. During that moment, it was Mr. Banerjee, Mr. Kalyan Banerjee, who spoke out of his turn, which was objected by BJP MP Abhijit Gangopadhyay, and this led to a verbal spat between the two, which later on led to this incident in which he hurt himself. And when we tried to get in a word from him, he said that nothing that has happened inside the JPC meeting can be disclosed outside the Parliament building. So this is what all the details we have on ground of what went there inside the meeting when this incident happened. What other information that we have is that at the moment, Mr. Kalyan Banerjee has been suspended for 1 day. However, Abhijit Gangopadhyay had requested that he should be suspended throughout the session. Back to you. Well, in fact, the chairman of the JPC spoke a short while back. Listen to what Jagdambika Pal had to say. देखिए, ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है, और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? ठीक सर, कल्याण बनर्जी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया बार बार कि चेयरमैन जो है वो उनका रवैया बायस्ड है। तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको मैं कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होती या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज़ सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का अवसर देता हूँ, बार बार अवसर देता हूँ। एक बार बोलने के बाद भी अगर वो सप्लीमेंट करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं, मैं कभी भी सुनने के लिए बैठक में कभी किसी को रोकता ही नहीं। और आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं। हर 5 दिन पे मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल हमको नहीं बोलने देते हैं या जगदम्बिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पार्टी में भी है। उनके भी मैं सेंटीमेंट्स का कदर करता हूँ, उनके भी सेंटीमेंट्स का। किसी को एमपी को अगर ये शिकायत है कि जगदम्बिका पाल से नहीं बोले, अगर ये एमपीज कह दे तो मैं इस कमेटी से चेयरमैन से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है सर, पहले टीएमसी का महुआ मित्र अभी कल्याण बंदोबस्त क्या बोलना चाहेंगे? टीएमसी के एक के बाद एक जो एमपी है उन लोगों के व्यवहार को लेकर। हम तो अपने जेपीसी के चेयरमैन के नाते इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई और जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने अब्यूज़ किया मुझे या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है।
Getting us some more breaking news right now. This is coming in from Bengaluru, where an under construction building has collapsed in Bengaluru, and the incident took place a short while back. So far, we're being told that 15 workers are feared trapped in the building. Fire and rescue team have already reached the spot. In fact, the numbers in terms of those who are trapped stands around 17 is what we're being told. The rescue team has already reached the building collapse site. Multiple people, in fact, are feared trapped under the debris. One person has already been rescued so far. That's the latest coming in. A short while back, you've also had the Bengaluru police now confirming that 17 people have been trapped. One person has been killed in the collapse. 2 have been rescued so far. 14 are still trapped and a rescue operation is underway. As these are the latest images, we'll stay with these images full frame as we get our reporters on the ground getting you the latest details. Narendra, my colleague, is going to join us from the Kannada newsroom, as well as Deepak from our newsroom too, getting us the latest details. Narendra, what's the latest that you are picking up right now from the spot in terms of the rescue operation that has been carried out so far? शवन, अभी इंफॉर्मेशन मिल चुका है ये बिल्डिंग कोलैप्स का वजह से 2 लोग मर चुका है बोल के डीसीपी अभी कंफर्म भी किया है, लेकिन और 15 लोग उसका अंदर फंस चुका है। उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू रखा है। वो देखिए 60-40 स्क्वायर फीट में ये 6th फ्लोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये लो क्वालिटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मंजुनाथ रेड्डी इसका मालिक भी होता, तो थोड़ा लोग उसका अंदर अभी भी फंस चुका है। उन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रखा है। बेंगलुरु बाबा साहेब पाड़िया में एक घटना हुआ है। अभी उसका अंदर बहुत सारा लोग फंस चुका है। कितना लोग फंस चुका है, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए फायर ऑफिसर्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम भी उधर लोकेशन को पहुंच चुका है। अभी देखिए मोर देन 50+ रेस्क्यू ऑपरेशन टीम उधर पहुंच चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को भी चालू रखा है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन मिला है 2 लोग इसका अंदर कौन काम कर रहा था, वो लोगों का मौत हो चुका है बोल के लोकल डीसीपी अभी रिपब्लिक कनाडा को इंफॉर्मेशन दिया है। अभी देखिए 30+ लोग फायर ऑफिसर उधर लोकेशन पे पहुंच के उधर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारा लोग मौत होने वाला है बोल के अभी पुलिस ऑफिशियल बोल रहे हैं। लेकिन let me also quickly bring in my colleague Deepak, who's joining us from the newsroom here in the national capital. Deepak, just walk us through the details as to where exactly has this incident taken place, and more importantly, how far has the rescue operation been completed? Right, Shavan, according to the details, it's a very tragic incident that has come to light from Babusa Palya in Bengaluru. An under construction building collapsed, which has resulted in the death of 1 person as of now. And like Nagendra Babu was saying a short while back, 2 people who were trapped under the rubble of this construction building are also feared dead. But what we get to understand right now is that the rescue operations are currently underway. 17 people were rescued from the construction site that collapsed. And what we'll have to look at here, Shavan, is the kind of lapses, whether the building was being constructed with all the safety parameters in place, and because there's heavy rains in Bengaluru as well, the ground beneath the building without a proper foundation is ought to collapse, and this is probably the reason why the building also collapsed, because over the last 7 days we've seen how Bengaluru has been battered by constant rainfall, and this has weakened the ground below the building and resulted in the collapse of this multi-story building. But we'll have to wait and watch if there are more casualties in the case. But right now what we understand from the DCP statement is that the rescue operations are currently underway. 17 people have been rescued and 1 person has been confirmed dead, and 2 others are currently trapped under the rubble. Well, in fact, Deepak, help us understand the location where the building collapse has taken place. Is it a densely populated area? And in terms of the rescue operation, how challenging it is at this point in time? Well, Shavan, as far as the rescue operations are concerned, it is indeed very challenging because this was an under construction building, and like Nagendra Babu was mentioning,
we'll have to wait and watch as to where this happened and whether the locality has all the amenities in place, especially the hospital and also the fire emergency personnel, because this is also, in the heart of Bengaluru as well. Babusa Palya is in the heart of Bengaluru and the rescue operations are currently underway. But what we have to understand here is that, Shaban, the rains could play a spoil sport in the rescue operations, because the rescue operations are currently underway and, the teams are working to find all those who are trapped under the rubble. And what we get to understand is that one person has died, Shaban, and as far as the operations are concerned, we'll have to wait and watch what details will emerge. A short while back, a confirmation has come in from the Bengaluru police in terms of the rescue operation that has been carried out so far. 17 people were feared trapped. We're being told that 2 people have already been rescued. Let's also see if the soundbite that has come in from the Bengaluru police, if that we can play that in a short while from now. But before that, just for all of viewers who are tuning in right now, this is an under construction building is what we are picking up. As you can see right now on your screens, the rescue operation is still underway, as there are several people who are still feared trapped. Those who are part of the rescue operation team includes the NDRF and a few other agencies who are carrying out this entire operation. Currently, we are being told that there are a few people who are still trapped. 2 people who are feared dead. In fact, their dead bodies have also been taken out from the debris. Let me also try and see if we can go across to our reporters on the ground, getting you the latest details, as this is a developing situation right now, getting us the more details. In fact, these are the latest visuals now coming in from Kazan on the sidelines of BRICS, the bilateral between India and Russia. On your screens right now, Prime Minister Modi and President Putin having their second bilateral within a span of just a few months. In fact, this is part of the delegation level talks that are basically underway. Just a quick recap of what we know so far in terms of the agenda of the summit and the bilateral. Remember, for the bilateral right now, it's also about what both the countries have been talking about, the energy cooperation that both the nations are essentially working on. But the big news essentially coming out of the BRICS summit is the end of Russian isolation. The very fact that a short while back you've had President Putin having a bilateral with the new development bank chairman, which is an indication that BRICS right now working towards another form of payment. That's the BRIC payment that is largely being looked at to basically ditch dollars and looking at an alternative payment system to be brought in place. Remember, this is also an attempt that has largely been made to bypass the sanctions that have been imposed against Russia to begin with. Remember, this comes in after the Russia-Ukraine war, where we have seen Western nations have imposed multiple sanctions on Russia. But thereafter, remember, Russia with its friendly countries have been working on an alternative payment system. In fact, as far as India is concerned, remember, the payment with regards to petroleum products have largely been through ruble, and the fact that India and Russia have been working towards looking at an alternative payment system altogether. Now, apart from that, remember, this is also the difference as far as this BRICS summit is concerned, is the representation of the global south. The participating countries that we're talking about is roughly about 36 participating countries, which includes countries like Egypt, UAE, Ethiopia being a few of those countries who are being looking at. Remember, this is something that the Prime Minister had already indicated at the G20 summit, where, remember, the Prime Minister largely speaking about the fact that it is high time that the global south is well represented. Now, with the delegation level talks that are basically underway, it's a clear indication of India's position on this entire matter, that a new world order is in formation. You have about 36 countries already participating in the BRICS. As far as leaders of these nations are concerned, remember, all
in person attending the summit, barring the Brazilian president, who we are being told would be participating in the summit through video conferencing. Joining me on this broadcast is my colleague Artha, walking us through the details of the bilateral talks. Now, this comes close to the heels of the previous bilateral that both the nations have had. In terms of the agenda, what more are you picking up, Artha? In terms of the agenda, as time and again mentioned by Prime Minister Modi, the early restoration of peace in the Russia-Ukraine conflict seems to be the first and foremost agenda of the Indian diplomatic apparatus when it comes to terms to negotiating with the Russian Federation. And as before also we have seen how President Putin had called upon India, had lauded India's efforts in restoring peace in the Russia-Ukraine conflict. Prime Minister Modi also met President Zelensky before, which also serves as a massive breakthrough in the role that India is set to play, the key mediation role that India might play in the Russia-Ukraine conflict. And in this meeting, like we saw, how President Putin raised the issue of early restoration, how Prime Minister Modi raised the issue of early restoration in the Ukraine-Russia conflict is, I think, the key, is what we are picking up on Shravan right now, that this remains the key and the foremost agenda of the Indian diplomatic apparatus when it comes to negotiating with the Russian Federation. Well, in fact, staying with these images now coming in of the delegation level talks that are basically underway, you have the Prime Minister who's been accompanied by National Security Advisor Ajit Doval. Remember, after the Prime Minister's visit to Ukraine, you've had the National Security Advisor going there and meeting President Putin, updating him about the meeting that took place between Prime Minister Modi and President Zelensky. Now, that's our big focus right now as the new world order formation is in place. Republic gets you live reports from Kazan. Republic deep investigation. For the first time on national television, Zishan Siddiqui spills the beans. Demolishes Bishnoi Bollywood narrative. Zishan's tell-all interview with Republic. Unmissable, explosive, exclusive at 7 p.m. वक्फ बोर्ड का आदेश आया है कि आप काम शुरू कर दो, हम पैसे हम नहीं देंगे आपको हमने अलाउ कर दिया, आप काम करो, और पैसे के लिए उन्होंने मना कर दिया, हम कोई पैसे नहीं देंगे, अपने फंडिंग से अपनी जो कमेटी जैसे मर्जी करो, हम आपको पेमेंट देंगे, आप काम शुरू करो। कितने मंजिल तोड़ेंगे और कब से? एक्चुअली हमारा 3 मंजिल का नक्शा था, एमसी कोर्ट में गया, हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई वो 3 मंजिल का, तो 2 मंजिल को हमने उनको बोला था कि 2 मंजिल हम उठाने को तैयार है, अब तीसरी मंजिल के लिए उनसे बात करेंगे। बाकी
Republic deep investigation. For the first time on national television, Zishan Siddiqui spills the beans. Demolishes Bishnoi Bollywood narrative. Zishan's tell-all interview with Republic. Unmissable, explosive, exclusive at 7 p.m. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Def, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. لديهم القدرة على أن يتخذوا القرار ولديهم القدرة على أن يذكروا الطائرة ويخرجوها ولن يرمش لي جفن. يتفضلوا. The IDF recently confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas and the face of evil behind the October 7th massacre, was killed in Rafah. لديهم القدرة على أن يتخذوا القرار ولديهم القدرة على أن يذكروا الطائرة ويخرجوها ولن يرمش لي جفن. يتفضلوا. Hyderabad, CRPF schools get threat. Is Ekta guilty of filming a minor in the adult scene? How can South tackle aging population? All this and more at 6 p.m. across the Republic. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Viewers, you're watching Across the Republic with me, Rakshita Mishra, this evening, and this is going to be a power-packed bulletin with all the ground reports of the top story that we're tracking from across the length and breadth of the country. First up, of course, the terror attack in Jammu and Kashmir. Of course, Republic TV getting you all the latest coming in from ground zero. It's time to strike back. Republic TV will be getting you also the latest that is happening in the national capital, viewers. This time, it's another
scam in the national capital. Aam Aadmi Party at the center of it, and this is a toilet scam. We'll tell you the details in this show. Also, we will be telling you what's happening with old Balaji. Now, Mumbai police has issued a notice to Ekta Kapoor, Shobha Kapoor. The police is going to question Ekta Kapoor and Shobha Kapoor for obscenity, and that involves minors. And also, the latest that we will be covering on the smog in the national capital region. More in this bulletin. First up, the headlines at 6. Prime Minister Narendra Modi arrives in Kazan to attend BRICS summit. Key meeting with Russian President Vladimir Putin today. First response from Army Chief after India-China patrol agreement, says India looking at the 2020 status quo. An altercation breaks out between TMC MP Kalyan Banerjee and BJP MP Abhijit Gangopadhyay in the Waqf JPC meeting. TMC MP Kalyan Banerjee injures himself after getting violent. He is now suspended for a day. Ekta Kapoor and mother Shobha Kapoor booked under the POCSO Act for objectionable scenes in old Balaji's Gandhi Baat. And after insulting Sanatan Dharm, Udayanidhi Stalin remains defiant, says will not apologize for the remarks. Now, amid the ongoing probe into the low-intensity blast outside the CRPF school in Delhi's Rohini, an anonymous email threatened explosions in several CRPF schools across the country. Now, sources tell us that a CRPF school in Tamil Nadu also received a threat mail and alerted the police. Among the schools that were threatened, 2 are located in the national capital, 1 in Hyderabad. Meanwhile, Delhi police pursued the suspected Khalistan link to the Prashant Vihar incident, that is the Rohini incident, with the security agencies keeping a tab on the suspected telegram handles used by the extremist elements. Here's a report. Days after a low-intensity blast outside a CRPF school in the Prashant Vihar area of North Delhi's Rohini sent the security establishment into a tizzy. An anonymous email threatened similar blasts at several CRPF schools across the country. According to sources, a CRPF school in Tamil Nadu received a threat email and alerted Delhi police. Among the schools that were threatened in the mail, 2 are situated in the national capital and another in Hyderabad. Sources said all CRPF schools were alerted in the wake of this anonymous email. However, on subsequent investigation, the anonymous mail, which was received on Monday night, was declared a hoax. थ्रेट को लेकर ये जो ईमेल आया वो तमिलनाडु के एक सीआरपीएफ स्कूल को ये ईमेल आया और देर रात ये ईमेल जो स्कूल की वेबसाइट है उस पर शूट किया गया था। दरअसल सुबह जब स्कूल ओपन होना शुरू हुए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ईमेल चेक किया, उसके बाद से पूरे देश में जितने भी सीआरपीएफ के स्कूल हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हम इस वक्त रोहिणी में मौजूद है, दिल्ली के, जहां पर ब्लास्ट हुआ था। मेरे पीछे भी आप ये सीआरपीएफ का स्कूल देख रहे हैं। सुबह के समय जो तमाम सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स है वो सिक्योरिटी रिव्यू करने बार बार बाहर पहुंच रहे थे। इस पूरी बाउंड्री पे आप देखेंगे कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं, इन सभी जगहों पर सिक्योरिटी का जो रिव्यू है वो साफ तौर पर किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके की पैनिक क्रिएट अभी नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत की जा रही है। Meanwhile, Delhi police pursued the Khalistan link to the Delhi blast, with the security agencies closely tracking suspected channels operated by extremist elements on UK-based messenger service Telegram. The Delhi police earlier wrote to Telegram seeking details of a handle called Justice League of India, which put out a post about the Prashant Vihar incident and tagged it with CCTV footage of the explosive going off. Amid the mounting bomb threats to passenger flights operating on the domestic and international circuits, does the email threatening blasts at CRPF schools suggest a pattern of mischief by elements inimical to the country's interests?
A protest erupted in Valley over the dastardly killings in Gandarbal, and now there are calls for a payback that is filling the air of the valley. The family members of the deceased are demanding justice for their loved ones. Your channel has visited the residence of one of the victims, speaking to his family members, who demanded that those who took their loved one's life should be brought to justice. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. Days after the deadliest terror attack in the valley since the coming of the new government that claimed the lives of 7 unarmed civilians in central Kashmir's Gandarbal. The bereaved kin of one of the victims has demanded justice. देखिए, मैं जहाँ तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है, और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें. Republic spoke to the family members of Shashi Bhushan Abrol, who shared their anguish over losing their loved one to the cowardly attack. सुबह चला है, रात को ही पता चल गया. वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे. तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की उसकी. क्या बता रहे थे? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ, तो आकर मैं बातें करती हूँ. आप देवरानी हैं, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? कल भाभी ने 6-6:30 बजे भाभी की बात हुई भैया के साथ. भाभी तैयार भी बता रही थी, तो भैया बोलते बात कर, कहते मैं मंदिर लेट हो रही, मैं आके आपसे बात करती हूँ. बस जैसे आए तो उसके बाद भैया ने फ़ोन ही नहीं उठाया. फिर हम पूरी रात तड़पते रहे, फ़ोन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. अब सुबह जाके हमें पता चला. कल जब लास्ट कॉल उन्होंने क्या करवा चौथ के लिए किया? हाँ जी, अपनी वाइफ को करवा चौथ के लिए किया. Meanwhile, Chief Minister Omar Abdullah visited the residence of Dr. Shehnwaz Dar, who also fell victims to the Lashkar terrorists in Gandarbal. The CM earlier came out strongly against the attack, claiming it to be the handiwork of vested interests who are out to disrupt the peace in the valley. He also condemned the violence against unarmed civilians. कई सारे कीमती जानें छीनी गई और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए. इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है. बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है, और इससे हासिल क्या होगा? पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला. जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा, और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं. Meanwhile, BJP leaders also visited the bereaved kin of the victims. Amid the manhunt for the cowards behind Gandarbal, the Jammu and Kashmir police dismantled a newly floated terror outfit in the valley that operated as a cover for Lashkar-e-Taiba. Counterintelligence Kashmir has busted a terror module that was being operated by the Lashkar commander Baba Hamas. This was under the name of a new offshoot, Tehreek-e-Labbaik Muslim, and many of the persons have been detained in the raids carried out in the 7 districts. Meanwhile, in Bihar, the mortal remains of 3 construction workers reached their kin. घटना लड़का है, जैसे कि शाम 7:15 बजे पर 2 आदमी ये मरा है, हनीफ और गलीम. ये दोनों जैसे हनीफ के पास तो लगभग मेरे सामने से आ गया था, सामने में मार के उसको. गलीम थोड़ा पीछे था, वो उसको रिटर्न उधर से देख रहा था ना कि वो थोड़ा कह रहा है, वो जो कह रहा है वो देखने के चक्कर में ये भी उसको भी मार. Earlier, LG Manoj Sinha said that the forces have been given a free hand to avenge the attack. सुरक्षा बलों को पूरा फ्री हैंड दिया गया है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से इन परिजनों के परिवारों के साथ है, और मुझे लगता है कि
जल्द ही जिन लोगों ने इस घृणित काम को अंजाम दिया है उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। With a fresh wave of terror attacks jolting the JNK, the common refrain in the valley is revenge at any cost. Now, familiar sinking feeling has gripped the Delhiites and, of course, the adjacent areas as the air quality worsens in the city, forcing residents to put on the customary face masks and confine themselves indoors, especially ahead of festive season. It's very difficult, but a toxic haze and the smog is blanketing vast swathes of the capital. While the air quality index, the AQI in several areas, has slipped to the very poor range at over 350. Doctors, meanwhile, are reporting a surge in the number of patients complaining of respiratory distress as well as itchy eyes and skin. So with the smog starting to take a toll on public health, the RML hospital has announced the opening of a clinic to treat pollution-related afflictions. In fact, we'll get you more in this report. Another year, same problem. The national capital has yet again turned into a gas chamber. The air quality has worsened, leaving hapless residents with a familiar sinking feeling. बहुत जल्दी सांस फूल जाती है और बिना मास्क के साइकिल चला नहीं सकते और ये इस खास करके इस मौसम में होता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर परालियाँ जो जलती हैं, इन पर रोक लगाया जाए। ये जलती है तो यहाँ पे पोल्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है। As the air turns foul by the day, doctors are reporting a surge in patients with respiratory illnesses. Level of the pollution has increased tremendously in Delhi NCR. So right now we are seeing patients of respiratory, eyes and skin complaints majorly in our OPDs. Delhi continues to struggle with air pollution as the average air quality index in the national capital surpassed 310, putting it in the very poor category. Right now we're standing here at the Yamuna bank. You can see the visuals very clearly here as the national capital woke up today. A layer of smog engulfed Delhi and the nearby areas including Noida today on Tuesday morning. A second stage of a graded response action plan has been implemented in the national capital, banning the use of coal, firewood and tandoors in hotels, restaurants and open eateries as well. Rising pollution leaving residents gasping for air. The Commission for Air Quality Management, CAQM, has now enforced GRAD 2 measures to rid the city of the familiar toxic haze. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके के डीजल जनरेटर को चलाने पर पाबंदी होगी। साथ ही सड़कों पर गाड़ियों की एक तरीके से संख्या को कम करने के लिए पार्किंग चार्जेस भी आज से दिल्ली में बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त हम नेताजी सुभाष पैलेस पे मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि सुबह के समय दिल्ली की सड़कों पर आपको हल्का कोहरा जैसा देखने को मिलेगा। दरअसल ये स्मॉग है, पॉल्यूशन की लेयर है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि सड़कों के ऊपर पॉल्यूशन इतना है कि जो गाड़ियां निकल रही हैं वो स्मॉगी आपको फील हो रही होंगी। साथ ही मैं आपको टीवी टावर की तस्वीर दिखा दूं, ये भी आपको हल्का धुंधला नजर आएगा क्योंकि पॉल्यूशन की लेयर इस कदर दिल्ली के अंदर है कि लोगों को अब आने वाले दिनों में और परेशानियां भी हो सकती हैं। While the AAP government said it was taking necessary steps to mitigate the pollution woes, right now we are standing outside this smog tower situated in Delhi's Connaught Place. This smog tower